Hello guys, my name is Hariom Kumar. Today is my presentation on Robo Advisor, and that presentation basically submitted to our assistant professor Mr. Arup Kadia. So before starting my presentation, I will take an example because यह example रोबो एडवाइजर को समझने में आगे फर्दर हेल्प करेगा. तो एग्जांपल यही है सिंपली. There are a lot of people basically visited in e-commerce website like Amazon, Flipkart, Mintra. So what happened is that so if let's suppose me actually when I purchasing a sub products, but later on I wanted to not purchasing the product basically मेरा मन नहीं करेगा लेने के लिए, तो मैं उसको फर्दर उसको एक्सिट कर दूंगा. बट होता क्या है कि व्हेन वी आर मूव एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग विजिट करेंगे अमेजोन वेबसाइट वगैरह पर, तो होता क्या है कि वही प्रीवियस प्रोडक्ट को बार बार वो स्वैप करता है. नहीं, आपने जो है प्रीवियस जो प्रोडक्ट था आपने लेने के लिए सोचा था बेसिकली, तो मतलब परचेज किया नहीं, तो दैट happens because there is a algorithm work behind that, and that algorithm is nothing but a machine learning algorithm. Because as we all know that AI basically rules everywhere in an e-commerce website, in a healthcare as well as research organization. Similarly, in a robo advisor, it is also part of AI. There is also a machine learning algorithm work in a robo advisor. So let's start the next slide. So here is the our outline of our presentation, that is what is robo advisor. Basically we will discuss uh, in the next slide, and history of robo advisor, benefits of robo advisor. Next one is that AI powered stock trading, actually types of AI algorithms in a robo advisor, risk and consideration, and लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लास्ट में हमको समझना हो कि रोबो एडवाइजर करता क्या है लेमैन में एक्चुअली में, तो हम लोग कंक्लूजन पार्ट में ही डिस्कस करेंगे बेसिकली. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here we go now start robo advisor basically, because in a previous slide already we will discuss a simple example so that we connect easily to the robo advisor. Now robo advisor basically is nothing but it is a digital platform that works on some mathematical algorithm. We can say the machine learning algorithm, because it's made on basically on some AI models, because it uses some AI algorithm basically. So robo advisors are, it's probably works on a financial sector, like in a stocks market, or we can say that insurance related. Here we find that robo advisors are financial advisors that provides of some financial advices and the investment management online with moderate to minimal human intervention. Already we say that basically it works on फाइनेंशियल सेक्टर इन मतलब रोबो एडवाइजर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल ही फाइनेंशियल सेक्टर में करते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट्स वगैरह में. और इसमें होता क्या है कि अगर हम रोबो एडवाइजर यूज करते हैं तो इसमें ह्यूमंस का बहुत कम यूज होता है, अगर बोले तो ना का बराबर होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रोबो एडवाइजर इज अ प्रिडिक्टिव इंजन built with machine learning models. We will already discuss that robo advisor basically made on the machine learning algorithm basically, and also uses some mathematical algorithm. Now in the next point, it is of the same category as the predictive engines built by the other big companies. Now move to the next point is basically that a robo advisor provides a digital finance advices based on the mathematical rules or algorithm. That that point is also discussed basically. If we are if we are talk about robo advisor, come on, if talking about robo, basically robo terms refers to the completely digitally in the sense the works basically work on a digital, and then advisor is basically advices, जो कि advices देगा. और इसमें होता क्या है कि ह्यूमंस का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है अगर हम बात करें तो. So at the time robo advisor become a more successful in a stock markets basically. अगर हम करें तो स्टॉक मार्केट में आज के टाइम में रोबो एडवाइजर का बहुत ही यूज हो रहा है बेसिकली. और इट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म. सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म बोलने का मतलब यही हुआ कि यह एक, ये नहीं बोलेंगे कि रोबो एडवाइजर बेसिकली सिंपल एक ही सेक्टर में काम करता है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं. इट्स वर्क्स ऑन लाइक स्टॉक मार्केट्स,
it's probably we cannot say that it works on a specific zone basically. No, never we can say that it works on a stock markets related data. It's also insurance related data also. Here we can see that in example, it is a product specific like a stock market or insurance related. Okay, now move to the next slide basically. In this section, we will discuss on history of Robo Advisor because we have already little bit idea about a Robo Advisor, what is Robo Advisor, where it work actually basically. In this section, we will discuss about history. So the concept of Robo Advisor basically come in 2008 when global market slowed down. उस टाइम पर ग्लोबल मार्केट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी 2008 के टाइम पे बेसिकली. तो उस टाइम तक ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा होता था स्टॉक्स मार्केट में या फाइनेंशियल सेक्टर में बेसिकली. तो द कंसेप्ट ऑफ रोबो एडवाइजर 2008 में आया जब ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन हुआ. इन द नेक्स्ट सेक्टर द फर्स्ट रोबो एडवाइजर बेसिकली is called a betterment was launched in 2010 by John Stein. Basically John Stein, we can say pronounce as John Stein. The man basically launched the first robo advisor that is called betterment, was launched in 2008. Actually, if we are discuss the next point, that is very important because in this point we will discuss that what is the impact of robo advisor when it launched, and after that how it impacted in the world actually. By the end of 2015, robo advisors from almost 100 companies. It is a big number actually. We can say that not a one two company, 100 companies. We can say that more than 100 companies actually around the globe we are managing a 16 billions in assets of clients. That is massive number basically. We can say that 16 billion dollars, it's massive. हंड्रेड कंपनी रोबो एडवाइजर की यूज करती थी और 100 कंपनी की लगभग $60 बिलियन जो था वो रोबो एडवाइजर ही मैनेज करता था. सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ रोबो एडवाइजर आफ्टर लॉन्चिंग 2010 in the global market. So at this time in India also famous, quite little bit famous basically concept of robo advisor. So in this slide, we basically discussed about what is the benefits of robo advisor. So हम लोग को अभी तक इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि robo advisors का क्या benefits है. So उसमें सबसे बड़ा benefits यही है कि इसमें humans का interventions बहुत कम होता है और the most important is that it can track previous data और present data. That is massive. That is not handled by humans actually. अगर हम बोले तो the point is that here they discuss lower fees. Lower fees. Robo advisor typically charges a lower management fees compared to traditional human financial advisor. As we all know that before 2010, actually the concept of robo advisor not come actually yet. Then तो उस टाइम तक ह्यूमंस ही उसको हैंडल करते थे. तो उस टाइम तक ह्यूमंस जो थे काफी हेवी फी चार्ज करते थे इसके लिए. बट आफ्टर कमिंग अ रोबो एडवाइजर द ह्यूमन इट lower the fees actually because everyone wanted to use the robo advisor concept basically. Next one is that accessibility. Robo advisors basically provide the investment management service to a wider range of individuals. That is we will discuss already discussed. It is good basically benefits in a lower base or accessibility. In the previous slide, we will discuss what is the benefits of Robo Advisor. That is, it basically accepts accessibility, and the second one is that lower fees. Now move to the in this slide. Actually, in this slide, we will discuss about AI powered stock trading. What is that? As we all know that Robo Advisor completely works on AI algorithm basically. That is machine learnings, predictive analytics. In the machine learning, Robo Advisors uses an advanced machine learning algorithm. In the second slides, we will already discuss the interruption of machine learning algorithm in the Robo Advisor basically. तो मशीन लर्निंग करता क्या है कि यह मेनली इजी कर देता है रोबो एडवाइजर को बिकॉज इट्स ट्रैकिंग अ मैसिव डेटा. प्रेजेंट डेटा हो गया, पास्ट का डेटा हो गया, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से यह इजीली एक्सेस कर पाता है और एक कस्टमाइज वे से डेटा को प्रेजेंट करता है एक्चुअली में हर इन्वेस्टर का इंडिविजुअली बोले तो मशीन लर्निंग यही काम करता है इसमें. Predictive analytics, AI powered robo advisors can predict a market movement actually and just adjust the portfolios accordingly, aiming to maximize returns and minimize risks. Predictive analytics, in the sense we can say that
जो जो करंट मार्केट का सिचुएशन रहता है कि क्या अभी हाल है एक्चुअली में स्लो डाउन है या प्रॉफिटेबल है, तो उस हिसाब से ये जो है रोबो एडवाइजर्स एनालाइज भी करता है, प्रिडिक्ट भी करता है एक्चुअली. So we will move to the next slide. So that is the impact of AI in Robo Advisor, AI powered stock trading. That is why we called. Now in the next slide. Okay. Now in this slide we will discuss that types of AI algorithms in a Robo Advisor. As we all know, it's totally handled by using machine learning algorithms. Here is we can say that neural networks. First one is that. Second one is decision tree. Third one is that reinforcement learning. जितने भी मशीन लर्निंग अगर पढ़े होंगे स्टूडेंट्स वगैरह बात करेंगे तो वो लोग थोड़ा मोड़ा इसके बारे में जानते होंगे, न्यूरल नेटवर्क्स हो गया या रेनफोर्समेंट लर्निंग बारे में. तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या करता है एक्चुअली में, एनालाइज अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द. अगर यहाँ पर हम बात करें एनालाइज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा इन द सेंस वी कैन से दैट जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, लार्ज डेटा होते हैं, इन द सेंस वी कैन से दैट प्रीवियस डेटा, प्रेजेंट डेटा, उसको एक पैटर्न के तौर पर बताता है कि क्या होगा एक्चुअली में, आगे क्या होने वाला है या प्रेजेंट टाइम पे क्या होगा. वी विल मूव ऑन, वी विल बेसिकली इन्वेस्टिंग और नॉट. एक्चुअली मुझे एक तरह का पैटर्न बताएगा कि आगे क्या होगा. एक्चुअली बोले तो प्रिडिक्ट भी कर सकता है, ये प्रिडिक्ट करेगा. सो द सेकंड वन इज दैट डिसीजन ट्री. Use a tree-like models of decisions and their possible consequence to guide the investment strategy. It is just like a neural network actually, but it is another algorithm. And third one is that reinforcement learning algorithm. It is also making a lot easier robot advisor basically, so that can a person can easily tracking a data easily data को track कर सके, और we can say that invest कर सके by the using a reinforcement learning algorithm. Okay, now move to the next slide actually. Okay, in this slide actually we will discuss about risk and consideration. तो जितने भी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कि जितने भी डिजिटल थिंग्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बेनिफिट्स ही देंगे, थोड़ा मोड़ा रिस्क भी होता है एक्चुअली में, लिमिटेशन भी होता है उसमें. तो उसी के बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में. सो हियर वी कैन से दैट इज द फर्स्ट वन इज द लिमिटेड पर्सनलाइजेशन. इसका मतलब यही है कि रोबो एडवाइजर्स मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन एज ए ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर. एक्चुअली इसका कहने का मतलब यह है कि जो रोबो एडवाइजर है समटाइम्स नॉट वर्क्स एज लाइक अ ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर. इसमें यह भी एक एक्चुअली में एक मशीन है एक्चुअली में हम बोले तो जरूरी नहीं है कि यह करेक्ट वे से काम करेगा लाइक अ ह्यूमन एडवाइजर. एंड सेकेंड वन इज दैट इट इज सेकेंड वन साइबर सिक्योरिटी रिस्क. तो जितने भी आज के टाइम हम लोग देखते हैं डिजिटल थिंग्स, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता ही है एक्चुअली में. तो रोबो एडवाइजर्स रिले ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एज वी नो दैट इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बेसिकली. सो साइबर सिक्योरिटी का रिस्क होता है तो विच कैन बी वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट्स एंड डेटा ब्रीचेस. समटाइम डेटा ब्रीचेस होने का भी चांसेस होते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, this is the last one actually. That is the conclusion part. That is the most important part actually. So here we can say that it is nothing but it is a pyramid structure that's followed transformative, efficient, and last one is that accessible. So robo advisors are poised to revolutionize the wealth management industries, offering a personalized investment solutions, lower fees, and enhanced accessibility. As the technology continue to evolve, it will be crucial for investors to weigh the benefits and risks to make an informed decision about their financial future. So इसको अगर हम लेमैन में बोले तो आफ्टर कमिंग द रोबो एडवाइजर इन आवर in world in 2010, it makes more easier basically for the lot of industry. हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है कि 2015 तक लगभग 100 कंपनी जो है रोबो एडवाइजर कंसेप्ट यूज करती है, रोबो एडवाइजर जैसे चीज, और $100 बिलियन जैसे एसेट्स को हैंडल भी करता है रोबो एडवाइजर बेसिकली. तो रोबो एडवाइजर आने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं बेसिकली. बोले तो एकदम ह्यूमंस के इंटरवेंशन बहुत कम हो गया है, फीस का भी रोल कम हो गया इसमें, फीस बोले तो लोअर कर दिया एक्चुअली में. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शो अ पैटर्न एक्चुअली अगर हम ह्यूमंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो पैटर्न नहीं बता पाते हैं, बिकॉज इन सम टाइम humans can stuck, but a robot advisor uses a complex mathematical algorithm that is nothing but us. We will discuss already previous slides. uh, that makes more easier for the investors. And here we can see actually
It's offering a personalized investment solution, okay, and lower the fees that already discussed actually. And the most important is basically risk to make an informed decision about their financial future. Yeah, it can easily predict actually futures में क्या होगा कैसे, तो using some algorithms, that is machine learning algorithm, they're showing the patterns what happen in the future. You can invest easily by seeing that if the market going in the loss, then investor can पैसे को वो निकाल सकते हैं by using a robo advisor concept basically. The last one is that actually my slides now completed, so thanks.